CSGO ने रिसेंटली सेलिब्रेट करी है अपनी 10th ईयर एनिवर्सरी और इस 10 साल की जर्नी में CSGO ने हमको बहुत कुछ दिया. We've seen some intense matches, sold out arenas and of course, how can we forget the energy of the fans. तो आज के इस एपिसोड में हम नजर डालेंगे इन्हीं बीते हुए 10 सालों के कुछ इंटेंस हाइलाइट्स के ऊपर. उसके बाद एक हिस्ट्री लेसन होगा अबाउट व्हाट अ CSGO मेजर एक्चुअली इज एंड साथ ही साथ होगा एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल इंटरव्यू. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, दिस इज सुपर जॉनी एंड यू गाइस आर वाचिंग द वर्ल्ड ऑफ esports. So CSGO के अंदर हमने काफी कुछ देखा है. We have seen a lot of skilled players, we have seen a lot of intense movement, and we also see the fans who refuse to let go of the game. अब इन बीते 10 सालों की एक intense highlight हमने बनाई है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, and let's have a look. Come down to Shoxy, he's gonna get caught in the corner though. Gets a running shot on a Neo! Gets a second one, Shoxy's making it happen, a third one, Shoxy! The fourth! Shoxy is a god! They're taking their sweet time, hoping to catch somebody peek on Envy's side. And well, that's what happens when you go around the corner. Happy with one dig. Oh, and another one! Oh, and a third! Happy! Debris is like sweating bullets! Happy's gonna get the quad kill in the ace! What is this? Here he comes once again. The first base is Adren. He's going to hit the ground there as Cold. Oh, what? A jumping double from Cold. What is going on right now? How does he do this? Play it bags could swing back in that direction because here isn't going to be pressure, but he doesn't know that. He's also flashed off the eagle. Works though. Limited vision, limited weapons. Doesn't even matter, dude. Frag! Oh, the fourth as well. How sick is this round for him? And he's looking for the eighth. The first ace from anyone on a straw list in this tournament, and now we're getting bumped. Wants to try and hold off the rotations. Oscar's gone. Chris isn't. Op still in the picture. Op still very much in the round. Oh, Chris! He's found three. It's down to a 2-on-2. Chris, can he close this with an ace? Oh my God! Chris, the Wolf of Wall Street gets an ace, and it's championship point for Esports. They do have a three-man stack on this side. Device, who's had a really rough game, flashed. He's going to get that shot, and that has to feel a little bit going out middle of the air to take down Alex, and now they're pushing. Oh, you've got to be kidding me! He takes every single one from nothing to the AWPN. He's even been flanked. Electronic looking for the cleanest finish. He's been turned on. Zaiwu, no help really, but he's still hitting shots. He's already got 3 and 4 and 5 and oh my God, Zaiwu! Unbelievable! That's the AWP and kills the guy CT. Yeah. Oh my God, he's knifed him and he's gotten away with the AWP. I'm starting to get nervous. There's no way. Katie, you can't win Pro League like this! You can't win Pro League like this! Oh, he just has to hit this shot and he's done it for Heroic. The leader, calling well above his years, clearing corners. Oh no! You're an animal! Heroic have done it and I just can't believe it! 40% of their team, only together since February. You have to go back towards A, but that's crumbling as well. Ops is in a huge amount of trouble. He's going to try and take matters into his own hands. Couldn't find the second shot fast enough, but Jax, he drops in. Oh, talk about a custodian. Talk about a superstar. Talk about the elite. Rops is on a romp, and we're going to overtime, baby. CSGO के मेजर्स कौन मिस नहीं करता. अगर आप काउंटर स्ट्राइक के फैन हैं, you know about the folklore, you know about the epic moments, and you can't forget those fan chants that are there in the arena. But let's now have a look at the history of what the CSGO majors are all about.
Other than every single ESL event, obviously, Majors are the pinnacle of Counter-Strike. They're the World Cup, the World Championship, the Champions League, the Super Bowl? It doesn't get more important than this, is what I'm saying. Some of you are OG enough to remember the first major in CSGO, and if you are, then welcome to a nostalgia overload. If you're not, welcome to all the information you need to pretend you're an OG. November 2013. Jungping, or however you say it, come at me Swedes. DreamHack Winter started CSGO's major run in that wonderful Swedish city, and fittingly saw two Swedish teams make it all the way. NIP muscled their way past a young Olof Meister and Michael, who might get a mention later on, maybe, who knows. It was then Shocks and Scream's very games they took down, but Smiths was the one who showed the most resistance to the pajamaed machine. They met Fnatic in the grand final, who beat Kenny S's Recursive and Sean Gares' Complexity on the way there. Yes, really. The first CSGO major started with a bang. Flusher and Forrest were in fine form as Fnatic edged Dust 2, NIP hit back with a brutal Inferno. Though Forrest was terrific in map 1, he went missing on train as a rampant Fnatic cruised to victory. The second major we ever saw was in Katowice, and if you've been keeping up with our content, you'll already know what happened. Virtus.pro surfed on the hype of the Polish crowd and dealt NIP another major final blow. Previous major winners Fnatic were toppled in the quarters by Olof Meister's LGV, now that's Chekhov's Tech 9 in action. Third time's the charm, the ninjas carried a rabbit's foot in those pyjamas in Cologne. That's not to say they were lucky, but they were not allowing the curse to overcome them once more. They beat Cloud9 and LDLC, including Kukuli, on the way to a grudge match. Fnatic, this time with Olof Meister, stood between them and glory. Get Right would not be denied. 60 kills on the two maps NIP won. Get Right wrote his name into history before, but this put an underline under his name. NIP had overcome the major final curse and headed to Sweden for DreamHack Winter again. In front of the home crowd, they dicked Hellraisers, clapped VP, and lost another grand final. Fuck's sake, lads. In the other corner stood LDLC, a legendary team with Shocks, Kiyashima, MBK, and Smiths. And then in the other corner was Happy, baiting his team. Despite Michael best efforts, there he is, and a sensational Inferno performance, NIP just couldn't get past Happy. It's fine, they couldn't lose another grand final. In Katowice, they took swift revenge as they decapitated Envy, who had signed the LDLC roster, and Fnatic on the other side pushed past Virtus.pro. Fnatic and NIP split Dust 2 and Cash, leaving Inferno as a decider, which NIP have been really consistent at winning. And yeah, he's got the kid, he's holding it down, I'm not sure there's enough time. Fnatic, they do it! That's now a 1-4 record for NIP in major finals. That's like Jurgen Klopp level. That should get some comments. Enough about NIP, let's talk about Fnatic. Fnatic have been dropping NIP in these finals and took to Cologne as massive favourites. Luminosity and VP knelt to Fnatic on their way to the final. Meeting them was Envy, but they were but cannon fodder. The Cologne final was Fnatic versus someone. The only team who could stop Fnatic was Fnatic. Flusher and Olof Meister were infallible. But in Cluj-Napoca, Envy flipped the script. They cut down Fnatic early in the quarterfinals and then G2 in the semis. Not even NIP could make the final, making this the first major final without a Swedish team in it. Na'Vi took down NIP thanks to a swashbuckling performance from Guardian, but not even he could out-orb Kenny S. Kenny S was the key ingredient. His addition changed the face of French CS and the game forever. Though Guardian carried Na'Vi to the final in Cluj-Napoca, he was unable to carry Na'Vi in Columbus, because his wrist was just fucked. But that didn't matter. Edward and Flamey picked up the slack in the semi-final as Na'Vi pushed past Astralis. On the other side was Luminosity, who had been climbing up the ranks steadily and now were looking for their crown. They dispatched of Liquid in overtime, twice. We won't go into that one too much, Liquid fans, just don't worry about it. While it was nice to see the Brazilians get their much deserved major win, it was quite an unsatisfying climax. Guardian's injury meant that Fallen had the run of the map, twice, and Cold Zero was unstoppable.
Luckily, it wasn't their only major win. Cologne rolled around and Luminosity, now called SK Gaming, were shit hot. They breezed through groups, washed Flipside away and slapped VP, but on the other side of the final was a Team Liquid desperate for revenge. But SK ran through Team Liquid. I mean, it was violent. We can barely show any clips from it without YouTube taking this video down. SK were clearly the best team in the world and had coasted to 2 major wins. But 2017 was a new year. Astralis, previously TSM, have been mentioned a few times. They've had a reputation of always being the bridesmaid, they were never the bride. In Atlanta though, they found their way to the altar for a shotgun wedding. They muscled past Fnatic, albeit not a particularly recognisable version of Fnatic, to fight the renovated, reinvigorated Virtus Pro. Virtus Pro, back with a bang. Magical. VP's feared nuke, unsurprisingly, went the way of VP. That's why it was feared. Astralis had their backs against the wall, and their superstar device wasn't having his best game. Thankfully for them, they had a switchblade hidden up their sleeve. Kiebi had always been an exciting talent, but he was in no way the most likely MVP candidate. But he ensured he was the only choice. Astralis ground out Overpass, but with the game in the balance on Train, Glaive called back-to-back A rushes and Astralis cracked them open. Astralis had won their first major. Time to repeat that in Krakow. Gambit, a team who were famously falling apart at the seams and split up not long after, somehow entered the flow state. Mo turned into Prime Kenny S on Overpass, and Gambit had done it. Their opponents? Immortals. The Samba mentality took them all the way to the final, and Brazil had another major finalist. But they just could not stop Zeus. But, I mean, neither could the gods. Why would mere Immortals be any different? He barked orders and saw his minions rip Immortals to shreds, after they themselves had been crushed on cobblestone. Zeus had gotten his major. If Zeus had waited long for a major, how long had NA waited? FaZe were unquestionably the best team in the world. They might have had some yips in grand finals, but they always got there. And then when they sauntered into the final at Boston, there was no way they were ever going to lose. Whatever Skadoodle had for breakfast in Boston, I want some. Whatever mystical realm Tarek was calling from, I want to be there. Cloud9 out-4, outgrinded and outfoxed FaZe Clan. They had 4 match points, but not only that, they were by far the best team in the world. It should never really have even gotten that far. Time gets to us all, but it got to FaZe Clan first. The Faceit Major of 2018 was simultaneously one of the least revered majors and the best thing England's ever done in CSGO. It was marred by controversy, there was loads of upsets and chaos as many top teams struggled to find form, and Astralis eventually cleaned up. This was Astralis at their peak. Katowice 2019 wasn't too dissimilar. Astralis was sweeping everyone except, weirdly, Renegades. Ents stood tall as their opponents. Many had tried, most failed, but Ents were new and exciting. I mean, they toppled Liquid and they tripped Na'Vi up. Why couldn't we dream? Because Astralis are inevitable. Another major, another new challenger. Vanguard fought their way into the grand final, which at the time was a massive upset. If you go back and look at the names now, it's perhaps less surprising. It mattered naught. If they are paid by the round, they must have had a pretty shit payout in Berlin. Astralis scythed through them and they sent away another challenger. Stockholm. The names, teams, players were all different, but the game was the same. Win at all costs. Simple had been to a major final before, but was slapped down by a bigger dog. In Stockholm, he was Clifford the Big Red Dog. His opponent was Nico, who had been to a final before, but in this one he was the massive underdog, so he couldn't choke. He was incredible on Nuke, a man on a mission. He was dragging G2 to a third... Natus Vincere were an unstoppable force. They were the new kings. And majors were back. 2022, that's right now. Antwerp is not a city steeped in Counter-Strike history, or at least, it wasn't. FaZe rocked up, again, as the massive favourite. They were dominant in pretty much every event coming up to it, and Na'Vi were unstable. They cleaned up against Heroic and Ents, while FaZe won a classic against Spirit in the semi-finals. There was an air of anticipation, but
truly this was not the Na'Vi of Stockholm. FaZe were the better team, and they finally got the major in a fashion they perhaps should have 4 years before. That Carrigan crushed Na'Vi so much more easily than he did Cloud9 a few years ago is, frankly, baffling. Rain poured down on Na'Vi, and FaZe were crowned as the best in the world. That is 10 years of Counter-Strike majors. Some of the best games of all time, the best stories, the finest teams. And yet somehow, the best is still yet to come. Brazilian fans, the best teams in the world, and a title that, as it stands, is up for grabs. Counter-Strike is great. What's your favourite major memory? Who's gonna win in Rio? What should Carrigan have called at 15-14 on Inferno in Boston? Alrighty, ladies and gentlemen, जैसा आपको last time promise किया था, we have a very special person joining us in this interview. और ये special इसलिए है क्योंकि पहली चीज तो they represent one of the biggest esports organizations in the entire world. और दूसरी चीज इसलिए कि एक और बड़ी esports organization को इन्होंने recently मात दी है. So please welcome Argon joining us from Team Vitality. Argon, how are you doing today? How are you feeling? Fine, fine. Thank you for having me. How are you doing? I mean, I'm doing good as well, and it's a pleasure to have you with us, Argon, because Team Vitality, one of the biggest names in the world. पहली चीज तो ये पूछूंगा, कैसा लगता है वो जर्सी डालने में? वही लाइक बहुत यूनिक है, लाइक इंटरनेशनल ऑग का जर्सी, लाइक जी बहुत ऐसा चांस नहीं मिलता बहुत लोगों को. बहुत जैसा आपने बोला कि बहुत कम लोगों को मौका मिलता है ये जर्सी पहनने का, एंड यू आर द वन ऑफ द चोजन फ्यू जो अभी ये वाइटैलिटी का जर्सी पहन के हमें खेलते हुए नजर आते हैं. बट इस जर्नी की स्टार्ट कैसे हुई? हाउ डिड यू गेट इनटू गेमिंग? पहले तो लाइक कभी ऐसा मोबाइल गेमिंग मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि लाइक स्टार्टिंग से लाइक बचपन से मैं सिर्फ कॉड ही खेलता आया हूँ कंसोल पे. लाइक स्टार्ट किया था मैंने Xbox 360 पे, फिर आया मैं PS4 पे, फिर लाइक सडनली लाइक आई थिंक मेरे डैड ने तोड़ दिया था मेरा PS4 ज़्यादा खेलने के कारण. तो लाइक मेरे को एक नया लेना पड़ा था, फिर वो भी बिगड़ गया, तो लाइक वही एक और ले नहीं पाया मैं, जिसके कारण लाइक मैं कुछ टाइम पास करने के लिए चाहिए था. तो मैंने मोबाइल गेमिंग में ऐसा देखा कि PUBG कुछ करके है, और लाइक मेरे कज़न्स वो सब खेलते रहते हैं रोज़ टाइम पास के लिए रात को. तो लाइक उससे चालू हुआ थोड़ा, आई थिंक ईयर कुछ खेला मैंने अप्रॉक्स, और फिर लाइक सडनली न्यूज़ आया कि लाइक कॉडहेम का कुछ बेटा अनाउंस हुआ है अराउंड इन 2019 ड्यूरिंग मई जून टाइम के. तो जैसे आया वो बेटा, मैंने लाइक तुरंत ही ग्राइंड चालू कर दिया. कुछ लीडर बोर्ड #नंबर 1 पे मैं पहुंचा था. तो लाइक जब वो ग्लोबल लॉन्च हुआ तो थोड़े बहुत जो दोस्त थे मेरे जो बेटा में बने थे, तो उसके साथ फिर मैंने ग्राइंड किया, टीम बनाया. और लाइक वो टाइम पे एक टीम आई थी सिनर्जी करके SG, तो वो मेरी पहली टीम थी. और फिर वो अभी तक का जर्नी इधर वाइटैलिटी तक हुआ है. वाइटैलिटी वो सेम सिनर्जी की जर्नी जो थी यहाँ तक आ चुकी है. बट एक चीज पूछूंगा, आपने जैसा मेंशन किया कि PUBG मोबाइल जो उस टाइप पे गेम होती थी, आपने उसको भी लगभग 1 साल किया. व्हाई डोंट यू ट्राई एंड गो प्रो इन PUBG मोबाइल? क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं द सीन गॉट वेरी बिग. हाँ, वो टाइम पे लाइक मेरे को पता नहीं था कि कुछ कम्पिटिटिव करके मोबाइल गेमिंग में भी है. तो लाइक वो जस्ट फन ऑफ इट के लिए मैं खेलता था PUBG दोस्तों और कजन्स के लिए. बस मजे करते थे PUBG मोबाइल में. कॉल ऑफ ड्यूटी आपने काफी ज्यादा सीरियसली लिया. हाँ वही. एंड वाज देयर अ रीजन बिहाइंड इट? वो टाइप ऑफ नॉस्टैल्जिया हो गया ना कि लाइक इतने साल खेला है, और लाइक लेजिट हर एक साल जो नया नया कॉड आता है उसके हर एक मैप गन सब एक साथ एक गन गेम के अंदर आ गए. टाइप ऑफ मिक्सचर है हर एक कॉड का. तो लाइक वो इंटरेस्टिंग आइडिया है. आई थिंक वो जो न्यूक टाउन का मैप था वो एक मैप था जिसने मेरे को तो खेलने में मजबूर किया था कि यार ये तो बचपन में खेलते थे, अब मोबाइल पे आ चुका है. बचपन में वो फ्यूचरिस्टिक न्यूक टाउन था ना 2025. तो लाइक अभी तो 2025 रियल लाइफ में आने वाला है. ये बात मैंने रियलाइज नहीं करती बिफोर यू मेंशनड इट. या वी हैव गॉटन ओल्ड नाउ. बट आर्गन, ये जो वाइटैलिटी के साथ आपकी जर्नी है, दिस हैज आल्सो बीन वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ आपने बताया कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के साथ आपका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ. एट द सेम टाइम PUBG मोबाइल का ई-स्पोर्ट्स सीन हम बूम होते हुए देख रहे थे जब कॉड इंट्रोड्यूस हो रही थी इंडियन ई-स्पोर्ट्स के अंदर. डिड यू एक्सपेक्ट कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल भी सेम हाइट्स पे जाएगा? हाँ, लाइक एक्सपेक्ट तो किया था, क्योंकि लाइक
जनरली अभी इंडिया में देखा जाए तो ज़्यादा बैटल रॉयल गेम्स का है, और लाइक कुछ नया आया है मल्टीप्लेयर लाइक फास्ट पेस गेम, तो लाइक सोचा था कि लाइक बढ़ सकता है, पर लाइक वही जितना एक्सपेक्टेड था उतना ऑब्वियसली हुआ नहीं। अब आई मीन नंबर्स के मामले में जैसे आपने बात करी कि जितना बढ़ सकता था उतना गया नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ द कम्युनिटी आई थिंक कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल हैज अचीव्ड क्वाइट अ लॉट। इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि एक क्लोज नेट कम्युनिटी है, एवरीवन नोज एवरीवन, और इवन दो हमारा नंबर्स पे उतना बड़ा बोलबाला नहीं है जितना पबजी मोबाइल का रहे, स्टिल एवरी ईयर वी डू मैनेज टू मेक इट टू द ग्लोबल स्टेजेस। या कम्युनिटी लाइक वही बहुत एक साथ है, लाइक एट दिस पॉइंट लाइक हर एक बंदे को जान चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि लाइक बहुत टीम्स एक्चुअली देखा जाए तो लाइक बहुत टीम्स के जो प्लेयर्स है एक दूसरे के साथ ऑलरेडी 5 टीम्स में खेल चुके हैं, तो लाइक थोड़ा बहुत आइडिया कि लाइक हर एक बंदा कैसा है वैसा। जी, और ऐसे में अगर अपने जो आपके कॉलीग्स भी हो गए, कई बार टूर्नामेंट्स में खेलते तो राइवल्स होते हैं क्योंकि सामने खेल रहे होते हैं वो, इनमें से एक आपकी बहुत क्लोज राइवलरी चल रही है टीम गॉडलाइक के साथ, तो उस हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताइए कि कब से ये जंग चल रही है वाइटैलिटी और गॉडलाइक की। लाइक मेरे लिए लिजिट जो एल क्लासिको टाइप होता है जो कॉडम है, वो मेरे साथ हर एक टीम से चलते आ रहा है। लाइक स्टार्टिंग में जो एसजी वर्सेस एमवाईएम था, मेहम वो था, फिर अभी जब हम SA12 आए उसमें SA12 वर्सेस टीम आईएनडी चलता था, अभी वाइटैलिटी वर्सेस गॉडलाइक चलते आ रहा है, और लाइक मेरे लिए तो कंटिन्यूसली 3 साल से वही चल रहा है जी। तो लाइक ये विन जो था हमारे लिए नॉट विन में बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड आई मीन जैसा आपने मेंशन किया कि ये राइवलरी मतलब 3 साल हो गए, बट फाइनली इट फील्स लाइक कि आप लोगों ने ढूंढ ही लिया है कि गॉडलाइक के जो प्लेयर्स है, जो उनकी लाइनअप है, उनके आर्मर में क्या क्रैक्स है। बिकॉज दिस टाइम कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इंडिया चैलेंज का जो मल्टीप्लेयर सीजन हमारा हुआ था रिसेंटली, वाइटैलिटी दे टुक अवे द विन ट्रॉफी, जीत के आप आगे बढ़े। पहला वो मोमेंट कैसा था जब गॉडलाइक को बीट किया आप लोगों ने? लाइक पहले तो लाइक वर्ल्ड कप स्टेज 4 में भी इस साल लाइक बहुत ही क्लोज आते हैं, लाइक हम विनर ब्रैकेट से गए थे, लाइक हमने थोड़ा चोक कर दिया तो लाइक 3-4 आ रहे थे, तो लाइक उसका वही थोड़ा ऑब्वियसली दुख हुआ था कि लाइक इतना पास आके भी हार गए। लाइक वही बस उसका मोमेंटम हमको लेके जाना था कि इस बार तो हराना है, तो नॉट विन में वैसा मोमेंटम लेके आया, और फिर वही फाइनल्स में 4-2 से जीते हम। अच्छा आर्गन, अब एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि व्हाट वाज योर माइंडसेट थ्रू ऑल ऑफ दीज इयर्स, क्योंकि जैसा आपने बात करी 3 साल लगे हैं, गॉडलाइक ने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया था एज द बेस्ट टीम इन द कंट्री, आप लोग उनके पीछे क्लोज सेकंड पे चलते थे, बट वो चीजें ऐसा लग रहा था कि यार ये ऑर्डर चेंज नहीं होने वाला है, ये ऐसे ही रहेगा, बट आप लोगों ने मेहनत करी, इतना ज्यादा कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ तक आया, एंड यू फाइनली टेकन द थ्रोन अवे फ्रॉम देम। तो व्हाट वाज योर माइंडसेट थ्रू ऑल ऑफ दिस टाइम? लाइक क्या चलता था, कितना प्रैक्टिस करना है, कैसे बीट करना है, वो सारी चीजें क्या सोचते थे आप? लाइक पहले साल वो ऐसा बोल सकते थे कि नंबर 1 नंबर 2 कोई भी आ सकता है जब SGMYM था, बट फिर उसके बाद उन्होंने लाइक बहुत मेहनत की और लाइक डोमिनेंस मेंटेन किया है, तो लाइक जो नंबर 1 हमेशा मोस्टली वही आते थे, पर लाइक जो नंबर 1 और नंबर 2 का गैप होता था वो लाइक कम नहीं होता था, थोड़ा ज़्यादा होता था, लाइक मोस्टली क्योंकि हर बार वही नंबर 1 आ रहा है ना, तो लाइक इस बार लाइक हमको दिखाना था कि लाइक वही, तो हमने भी ज़्यादा मेहनत की तो उसके कारण वही नंबर आ पाए। एंड इस बार आर्गन आपकी टीम के लिए ऑलरेडी एक जो डेफिसिट था वो ये था कि आप लोग रोस्टर चेंजेस के बाद थोड़ा सा रीबिल्ड कर रहे थे अपनी टीम को, तो उस टाइम पे थोड़ा सा लगा कि यार ये गैपबल हो सकता है। हाँ, क्योंकि लाइक लास्ट ईयर हमारे टीम में एक मूनस्कोप था और एक मॉन्क थे जी, तो लाइक कमिंग इनटू दिस ईयर लाइक कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण लाइक उनको छोड़ना पड़ा, और लाइक मॉन्क ने भी एज एनालिस्ट ज्वाइन किया है हमें, तो लाइक ऑब्वियसली 2 नए प्लेयर्स के साथ डिफ़िकल्ट ऑब्वियसली होता, और वही लाइक हमने बहुत ही टाइम दिया, लाइक आफ्टर स्टेज 2 आई थिंक लाइक हार्डली हमने 1-2 दिन ब्रेक लिया रहेगा, तो वही। अब आर्गन ये तो टीम्स की बात कर ली, अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारी ऑडियंस को, व्हाट डू यू लाइक टू डू, लाइक फ्री टाइम में क्या करना पसंद है आपको? लाइक मोस्टली तो मेरे लिए गेमिंग में लाइक मोस्टली तो कॉड ही रहा है, मैं लिजिट 12 साल से कॉड ही ग्राइंड कर रहा हूँ, और लाइक उसके अलावा मैं बोलूँगा तो लाइक इंटरेस्ट एनिमे देखने में है, तो वही। फेवरेट एनिमे भी बता दीजिए क्योंकि हमारी काफ़ी ऑडियंस भी एनिमे देखती है। लाइक अभी कोई टाइम मिला है फाइनली, तो लाइक अभी मैंने रिसेंटली वन पीस स्टार्ट किया है। वाओ, टाइम लगेगा इसमें तो। हाँ वही, बहुत टाइम लगेगा।
And apart from that, what was your family's response to you winning this trophy? क्योंकि ये तो एक काफी बड़ा major chunk, like prize pool बहुत बड़ा था इस event का. हाँ जी. लाइक वही वैसे खुश थे कि लाइक जीते हैं, पर लाइक उनको वैसे उतना समझ में नहीं आता कि गेमिंग में क्या ऐसा है, पर वैसे खुश तो बहुत थे. फैमिली सपोर्ट करती है आपके इस हाँ. अल्टरनेटिव करियर को? ऑलराइटी. तो एंड इस बार एक आखिरी चीज मैं पूछूंगा आपसे, अगर अपने फैमिली मेंबर्स को कुछ बताना हो कि क्या ये अहमियत रखता है आपके लिए टू लाइक नाउ फाइनली बी द नंबर 1 टीम इन द कंट्री, टीवी में बता दीजिए क्योंकि वहीं पे इंटरव्यू एयर होने वाला है. लाइक पेरेंट्स के लिए या मैसेज टू योर पेरेंट्स? हाँ, लाइक वही लाइक अभी तो बड़ी बात है कि लाइक इंडिया के लिए खेलने वाला है, तो लाइक वही सपोर्ट करने के लिए थैंक यू अभी तक. Just a simple thanks for all the support that your parents have given you. That should be it, I think. क्योंकि जितने early days होते हैं हमारे गेमिंग करियर के, they are like literally ultimate struggle चलती है उस टाइम. हाँ, मेन तो अर्ली डेज में जो सपोर्ट दिखाना वो इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि लाइक कॉडम का बहुत हम 200, 500, 300, 1000 रुपए का टूर्नामेंट्स खेलते थे और तब के लिए बहुत बड़ी बात होती थी. तो वही लाइक मतलब वो दिन जर्नी के स्टार्टिंग के जो थे वो काफी ज्यादा, जैसा आपने बोला कि they were very underwhelming, but अब तो एक नया एरा स्टार्ट हुआ है with the Call of Duty Mobile India Challenge World Championship की तरफ अब आप जाएंगे. So congratulations and also best of luck for a future. Argon, thank you so much for joining us for this lovely interview. It was a pleasure talking to you, man. सेम. और आज के लिए बस इतना ही, बट हम फिर लौटेंगे और भी एक्साइटिंग ई स्पोर्ट्स कंटेंट के साथ. एंड टू मेक श्योर आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब टू नॉर्डविन गेमिंग्स यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू शो योर सपोर्ट. अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय.